Hello everyone, welcome to the session. I think I'm live now. Yes. So welcome all of you to the session Last Mile Revision. So today is November 1 and we have a few weeks to go before the actual CAT exam. So I thought like why not revise the most important topics. Now at this point a lot of people might have this question in the mind, okay, we have covered the syllabus. Some must have covered it 100%, some must have covered it like 80%, some might have skipped a few chapters, and some might still be exploring what are the important areas. Itna kar lu to acha ho jayega. A lot of people would be going through this, and that's natural. So what I'll try and do in this series, last mile, this is part 1. So last mile revision mein I'll take up like multiple sessions here, and in this series I'll try and cover the topics which, like, in my opinion, I'm not like making any like conclusions here that yahi exam mein aayega. In my opinion, whichever topics I feel like a candidate must know, so that exam पूरा तो नहीं, अगर let's say 80% उसके लिए easy हो सकता है if you cover those areas properly. So in the last mile revision series I'll try and focus more on those areas. So that's the purpose of this. So we'll try and have around 8 to 10 sessions before the exam on the last mile revision. Along with this, I will have 5 workshops. Okay, I'll be taking 5 workshops. Workshops में we'll do important questions. ठीक है? So if you are new to the channel, do like the video and subscribe to the Unacademy CAT-alyst channel. You can see lots of content every day, live content, recorded content. You will find definitely this channel very useful in your CAT preparation process. Okay, so last mile revision का एक separate playlist होगा. So just stay updated, and the topics and the concepts that I'm going to revise here, try and prioritize a little bit more on that part. ठीक है, I'm not making any predictions क्योंकि एग्जाम में कुछ भी हो सकता है. Nobody can actually predict. But last 5-6 साल का ट्रेंड अगर देखेंगे, which chapters are maximum like being asked, most frequently being asked from, what kind of questions you should solve, कौन से logic है जो definitely पता रहने चाहिए. So those kind of things I'll try and cover in the last mile. Okay, it's not like a complete revision of QA. ऐसा हो नहीं सकता, आधा घंटा 40 मिनट के सेशन में इतना सारे चीजें तो कवर नहीं हो सकते. But at least I'll try and give you whatever is important. On the Unacademy platform, in the special classes section, I am taking up the revision classes of all topics. Okay, now these are free classes, so you can join me for my free classes on the Unacademy platform. This is my Telegram group link, and you can use this code to unlock all special classes for free. ठीक है, सारे special classes free तुम join कर सकते हो, and all QA topics I'll be covering in the special classes along with important questions. On the YouTube platform ये last mile revision होगा and QA workshop होगा. This is the plan for this month. तो पहले से बोल दिया, so you can stay updated accordingly. Just a brief background of mine, and not long back I was also preparing. So whatever things I do and I feel I should have done, or I have seen others do correctly in my experience, I try and share the same things in my classes so that you can benefit in the same way that I did. Do not repeat the mistakes that others have done. It's not just me, any faculty would be watching the classes from, they would definitely be advising you do this and not do that and not do that, because all of us have seen a lot of people failing, and we have seen what are the mistakes that people do. So when we say you something that please don't do this, please give mocks, please analyze the mocks, don't stop solving just because you are not getting good marks in mocks, don't stop giving mocks just because syllabus complete. These are some very common mistakes that every year people keep repeating. So that is what we need to avoid, because वो हमें बहुत पीछे ले जाता है. Okay. Now November 6th coming Sunday को again All India mock test है. All India mock test अभी next 3 weeks तो चलेगा अभी 6th को, 13th को and 20th को. So all of you participate in this. It's a free mock test and a lot of people would be appearing like participating in this test. So you'll get a very good idea about what your percentile is going to be. बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस है, आई कैन अश्योर यू दैट पार्ट. वेरी गुड क्वेश्चंस एंड फ्री मॉक टेस्ट है, तो क्यों नहीं देना. संडे को है 12 to 2, एंड दीज आर सम बेनिफिट्स आल्सो दैट यू कैन गेट. CAT application fee reimbursements and scholarship and everything. But beyond these monetary incentives, what I'll suggest is please give the test. Okay, you need to be in a competitive situation before the exam. You should feel the hit कि कहाँ लोग कैसे perform कर रहे हैं, how am I performing, what things I need to change, how are others scoring, मेरा ये section में क्यों score नहीं आ रहा है, what is my weak area, what is my strength area, how I should develop.
ये सब चीजें तुम्हें ज्यादा क्लियर होगा इफ यू गिव मॉक्स, ठीक है। एंड दिस इज अ कोर्स, ऐसे बहुत सारे कोर्सेस यू कैन चेक आउट इन द प्लस सेक्शन एंड you can join like my live classes. You taking a plus or an iconic subscription, don't forget to use this code and you'll get a 10% discount. I thought of discussing a few topics in today's class. Let me list down the topics to be discussed. क्या क्या टॉपिक्स डिस्कस करेंगे? इट्स नॉट लाइक फ्रॉम एनी वन एरिया आई विल डिस्कस टॉपिक्स बहुत सारे. पहले तो आई विल टेक अप नंबर्स का एरिया में. अ लॉट ऑफ पीपल कीप आस्किंग दिस, नंबर्स इज सो वास्ट, व्हाट ऑल थिंग्स वी शुड डू, व्हाट ऑल थिंग्स वी शुड स्किप, क्या ट्राई करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. तो नंबर्स का अ फ्यू थिंग्स दैट यू कैन कवर rather than indulging in the total पोर्शन. नंबर्स का फैक्टर थ्योरी हो गया, देन फैक्टोरियल्स हो गया, then cyclicity of digits, and a little bit of remainders. If you can cover these 4 topics also, it is more than sufficient. More than sufficient if you can cover these 4 topics. ठीक है. This is for total your numbers area. And numbers के बाद beyond I will take up little distribution theory in today's session. ठीक है. ये मॉडर्न मैथ से आता है. So we will be discussing these all concepts today. People new to the class, do like the session and subscribe to the Unacademy Catalyst channel. I hope I am clearly audible to everyone. तो आज के सेशन में आई विल ट्राई एंड गिव यू सम आइडिया अबाउट दीज टॉपिक्स, हाउ यू शुड थिंक ऑन दीज टॉपिक्स. नाउ ऐसा नहीं कि एक सेशन में इतने सारे टॉपिक्स एक साथ कवर हो जाए. आई एम होपिंग तुम लोग थोड़े थोड़े तो ये सब पढ़े होगे, बट आई विल गिव यू माई इनसाइट्स हाउ आई लुक एट दीज कॉन्सेप्ट्स एंड हाउ यू शुड लिंक देम, ओके, व्हेन यू आर स्टडिंग. तो अगर पूरा नंबर्स भी कवर नहीं हो रहा है, एटलीस्ट ये 4 एरिया अगर तुम्हारा होल्ड में है, मोस्ट लाइकली यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन इन द एग्जाम, एंड दैट इज व्हाट इज नीडेड. पूरा एग्जाम में कंफर्टेबल है नहीं, पूरा सारा नंबर्स हमने सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, और नो मैटर हाउ मच वी आर सॉल्विंग, वी आर एवरी टाइम गेटिंग अ न्यू क्वेश्चन. ये सबके साथ हो रहा होगा इन नंबर्स एरिया. तो दिस इज हाउ यू डील विद इट. जस्ट सेग्रीगेट एंड सिलेक्ट अ फ्यू टॉपिक्स. इसको अच्छे से कर लो. एटलीस्ट ऐसा तो फील ना हो दैट मैं पूरा सेक्शन छोड़ के जा रहा हूँ. दैट्स अ वेरी डेंजरस थिंग टू डू. एंड यहाँ से बहुत बहुत डायरेक्ट इजी क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो व्हाई नॉट अटेम्प्ट. ठीक है. तो लेट अस स्टार्ट. पहले फैक्टर थ्योरी से स्टार्ट करते हैं. यू नीड टू अंडरस्टैंड एक नंबर का, मान लो 12 है, 12 के क्या क्या फैक्टर्स है, 1 2 3 4 6 एंड 12. जो फैक्टर्स है, हाउ डू यू गेट द फैक्टर्स, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट टू अंडरस्टैंड. 12 जब हम प्राइम फैक्टराइज करते हैं, इट इज रिटन एज 2 स्क्वायर इंटू 3 टू द पावर 1. दिस इज कॉल्ड एज द प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म. Now the meaning of 2 square is whenever 2 is present, either it is present as 2 to the power 0 in the form of 2 to the power 0 or 2 to the power 1 or 2 square, and similarly whenever 3 is present, it is present as 3 to the power 0 or 3 to the power 1. यही दो फॉर्म्स ही हो सकता है, 2 to the power 3 तो नहीं हो सकता. Now any combination of these forms is going to give you the factors. So it is like 2 to the power 0 into 3 to the power 0 is 1, 2 to the power 1 into 3 to the power 0 is 2, 2 to the power 0 into 3 to the power 1 is 3, 2 to the power 2 into 3 to the power 0 is 4, 2 to the power 1, 3 to the power 1 is 6, 2 square and 3 to the power 1 is 12. देखो all these factors I could get, एंड दिस इज हाउ यू ऑब्टेन फैक्टर्स. देखो एग्जाम में ये नहीं करना, बट ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसी को बेस करके क्वेश्चन आए. बहुत ही सिंपल चीज है. इफ यू आर लुकिंग एट द कॉन्सेप्ट इन दिस वे, यू विल फाइंड ऑल क्वेश्चंस इन फैक्टर थ्योरी एक्सट्रीमली इजी, बिकॉज तुम्हारा करेक्ट थॉट प्रोसेस बन गया अभी कि फैक्टर्स को सोचे कैसे जाते हैं. वंस यू आर क्लियर ऑन दैट पार्ट, एनी क्वेश्चन ऑन फैक्टर थ्योरी यू विल फाइंड इट वेरी कन्वीनियंट. जितना भी वो ट्विस्ट करे, यू विल फाइंड इट वेरी कन्वीनियंट, बिकॉज वी नीड टू बिल्ड दैट थॉट प्रोसेस. Only like remembering the formulas will not suffice in the actual exam, because exam will not be only formula based. They want to test your logic.
factors, all of us understand factors. Do we understand really how those factors are obtained? अब मैं यहाँ पे बोलूंगा कि 12 पे कितने फैक्टर्स है ना, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 12 इज 6, 6 फैक्टर्स है, 1 2 3 4 6 12. हाउ कैन आई जस्टिफाई 6? ये तो छोटा नंबर था, मैंने सारे फैक्टर्स लिख लिए, काउंट कर लिए, बोला 6. बट आई कैन ऑल्सो गेट 6 इन दिस वे that 2 to the power 0, 2 to the power 1 and 2 to the power 2. I have 3 possible forms of 2, and 3 to the power 0, 3 to the power 1, I have 2 possible forms of 3. So 3 into 2, 6 combination, and each combination gives me a factor. So that is why total 6 factors. 12 was a small number, so I could count all the factors लिख के. But if the number is a big number, we cannot write all the factors. So this is how you conclude that okay, 6 total number of factors आएगा. क्यों? Because यहाँ पे जो तो प्राइम फैक्टर है 2 and 3, 2 का 3 फॉर्म है and 3 का 2 फॉर्म. ठीक है. Now can we like develop this concept a little further? Any given a random number, can I calculate the total number of factors? कोई भी random number n दिया गया है. The first step is to prime factorize it in this way: a to the power p, b to the power q, c to the power r, and so on, where a, b and c are prime factors of n. Okay, and once you get this, the first formula, total number of factors of n, it is given by this formula: 1 plus p into 1 plus q into 1 plus r, and so on. The second formula is sum of factors of n. I have derived these formulas also. Formula decryption in यही channel पे I have done sessions on formula decryption. How we are deriving these formulas, decrypt the derivation of the formulas. तो formula ऐसा नहीं कि derivation is like mandatory, derivation नहीं पता है तो नहीं होगा, वैसे नहीं है. But it certainly helps your thought process. But अभी उतना टाइम नहीं है, तो I am just explaining the formulas here. If you are interested, you can watch the derivation. This is how you can get sum of factors of any number. Just randomly substitute a, b, c जो भी होगा, p, q, r जो भी होगा उसको substitute करो. And ये डॉट 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 मैं इसीलिए लिख रहा हूँ because हमें पता नहीं है कितने factors हैं. Similarly, the third factor, total number of factors of n, third formula is n to the power total number of factors by 2. We'll take an example and we'll see how all this works. The number of ways of writing n as product of two factors. It is either total number of factors by 2, नहीं तो total number of factors plus 1 by 2. Number of ways of writing n as product of two factors, and अगर बोला कि as product of two co-prime factors, छोटे छोटे formulas है but जानने चाहिए. As product of two co-prime factors, it is 2 to the power k minus 1, where k is the number of prime factors. I'll explain this with an example, don't worry. K is the number of prime factors. So we'll take an example and we'll calculate everything यहाँ पे. ठीक है. Suppose I'll take n is equal to 120. 120 को प्राइम फैक्टराइज ऐसा कर सकते हैं 2 to the power 3 into 3 to the power 1 into 5 to the power 1, 8 into 3 24 into 5 120. So first calculation, total number of factors of 120 कितना आएगा ना, 1 plus p, यहाँ पे p का वैल्यू है 3, p q r जो पावर है, पावर में 1 ऐड करो, 1 plus 3 into 1 plus 1 into 1 plus 1, 4 into 2 into 2 16. Then sum of factors of 120, again same पूरा direct formula में substitute, a to the power p plus 1 minus 1 by a minus 1, so 2 to the power 3 plus 1 minus 1 by 2 minus 1 into 3 to the power 1 plus 1 minus 1 by 3 minus 1 into 5 to the power 1 plus 1 minus 1 by 5 minus 1. तो सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा इसका 2 to the power 3 plus 1, this is 15,
9 8 4 and this is 6, तो 360 आ रहा है. Then product of factors, if I multiply all the factors of 120, it is n to the power total number of factors by 2. Total number of factors 16 है, 6 by 2 आ गया 8. And in how many ways can you write 120 as product of two factors? देखो 1 into 120, 2 into 60, 3 into 40, 4 into 30, 5 into 24, 6 into 20, 8 into 15 and 10 into 12. So we could write it in 8 ways: 1 2 3 4 5 6 7 8. Product of two factors in 8 ways. And why did I get 8? Because 16 factors थे, दो फैक्टर लेके एक पेयर आ रहा है, तो 16 फैक्टर्स है तो 16 by 2. Then product of two co-prime factors. Co-prime का मतलब factors are said to be co-prime if their HCF is 1. Two numbers in general are said to be co-prime if their HCF is 1. तो यहाँ पे मैं जो पेयर ऑफ फैक्टर्स लिया हूँ, चेक करना है कि HCF 1 कहाँ पे है. तो यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे तो नहीं हो रहा है. So I got 1 2 3 4. So getting co-prime factors in how many ways? 4 ways, which is 2 to the power like 3 minus 1. यहाँ पे k का वैल्यू है 3, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स. समझा एग्जाम्पल? ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे नहीं. जस्ट टू अंडरस्टैंड फैक्टर थ्योरी, हाउ इट वर्क्स, क्या क्या चीजें जानने चाहिए फैक्टर से. माइंड में यू शुड एलैबोरेट द कॉन्सेप्ट इन दिस वे. एंड एक ही एग्जाम्पल चाहिए टू प्रॉपरली लाइक एनहांस योर अंडरस्टैंड. जैसे मैंने लिख तो लिया यहाँ पे, इसको और थोड़ा एलैबोरेटली सोचते हैं. वही सेम नंबर 120 को अगर ले रहा हूँ, you can write it as 1 into 120, 2 into 60, 3 into 40, 4 into 30, 5 into 24, 6 into 20, 8 into 15 and 10 into 12. तो यहाँ पे देखो, in all these cases I can say product is constant. सारे केस में प्रोडक्ट तो 120 आ रहा है, प्रोडक्ट इज कांस्टेंट. दिस इंप्लाइज द सम ऑफ द नंबर्स. सम इज मिनिमम व्हेन द नंबर्स आर अप्रोचिंग टू बी इक्वल. प्रोडक्ट कांस्टेंट, सम इज मिनिमम एंड द नंबर्स आर अप्रोचिंग टू बी इक्वल. तो देखो हर केस में प्रोडक्ट 120 है. सम देखो यहाँ पे 121, 62, 43, 34, 29, 26, 23 एंड देन 22. तो सम सबसे मिनिमम यहाँ पे आ रहा है. मिनिमम सम व्हेन द नंबर्स आर इक्वल. दिस इज वन वे ऑफ लुकिंग एट इट. एंड ये मैक्सिमम मिनिमम चैप्टर में यूज होता है. देन अगर 120 नंबर है, इसका स्क्वायर रूट कितना आता है? स्क्वायर रूट ऑफ 120 इट इज लाइक 10.9. क्योंकि 121 होते ही 11 हो जाएगा, ये ऑलमोस्ट उसके आसपास ही होगा. सो आई कैन राइट दिस हाफ ऑफ द नंबर्स. यहाँ पे जितना हाफ लिखा मैं, दिस हाफ ऑफ द नंबर्स आर लेस देन इक्वल टू द स्क्वायर रूट, whereas this half of the numbers are greater than equal to the square root. Can we tell that? मतलब जब भी कोई नंबर का प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स लिखते हैं इस वे में, आधे फैक्टर्स उसका स्क्वायर रूट से नीचे रहेगा एंड आधा उसका स्क्वायर रूट से ऊपर रहेगा. These things won't be directly written in book, and book में अगर लिखा जाएगा भी तो we cannot remember this. We'll have to like introspect and think, and इसको बोलते हैं ना, जो कॉन्सेप्ट को पूरा इंटरनलाइज करना है कि क्वेश्चन आएगा तुम ऐसे सोच सकते हो. ठीक है. Then
Related to factor theory, we have something called as the Euler's number or Euler's quotient function भी बोलते हैं. Phi n क्या मतलब है उसका? मान लो मैं n इक्वल टू 15 ले रहा हूँ. So in general, phi of n is the number of natural numbers that are less than and co-prime to n. Number of natural numbers that are less than and co-prime to n. So how many natural numbers can be less than and co-prime to 15? So natural number 1 से start करो. 1, then 2, then 4, then 8, then 11, then 13. अच्छा 9 भी तो है. Sorry, 9 नहीं, 7. So 1, 2, 4, 7, 8, 11, 13 and 14. So I get that there are 8 such numbers. So phi of 15 is equal to 8. There are 8 such natural numbers that are less than and co-prime to 15. ठीक है, but what if it's a big number? 15 तो छोटा number था, हमने count कर लिया. If it's a big number, then the formula is, first step is you prime factorize a as a to the power p, b to the power q, c to the power r and so on. And the next step is phi of n is given by the formula n whole into 1 minus 1 by a, then 1 minus 1 by b, 1 minus 1 by c, जहाँ पे a, b, c तुम्हारे प्राइम फैक्टर है. अगेन अ डायरेक्ट फार्मूला. क्योंकि ये सारे फार्मूलाज आर रिलेटेड टू द प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म ऑफ n, तो इन सबको तुम एक साथ पढ़ सकते हो. दिस इज कॉल्ड एज यूलर्स नंबर, यूलर्स क्वोशिएंट फंक्शन. तो जैसे बोलो फाई n, नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स दैट आर लेस देन एंड को-प्राइम टू n. तो हमने एग्जांपल लिया 15 का. 15 इज अ स्मॉल नंबर, तो यू कुड काउंट हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर जो उससे कम भी है एंड को-प्राइम भी है. ओके, बट व्हेन यू आर टेकिंग एनी नंबर इन जनरल, तो यू कैलकुलेट इट इन दिस वे. अब इसका एप्लीकेशन कहाँ पे है? यूलर्स नंबर क्यों कैलकुलेट करोगे? यूलर्स नंबर रिमाइंडर थ्योरम पे आ जाता है. ओके, रिमाइंडर ऑफ any number a to the power phi n when divided by n is 1. n तुम्हारा नेचुरल नंबर है. Suppose for the example, I'll say find the remainder of 59 to the power let us say 97 to the power 120. 59 to the power 97 to the power 120. ये क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं? So the first step is तुम 120 को प्राइम फैक्टराइजेशन करो. It is 2 to the power 3 into 3 to the power 1 into 5 to the power 1. And ये 120 का phi of 120 निकालो. 1 minus 1 by 2, 1 minus 1 by 3, 1 minus 1 by 5. So 120 by 2, 60 into 2 by 3, 40 into 4 by 4, 32. So phi of 120 are at 32. So what I'll do is look carefully how this question is solved. मैं ऐसा यूज करूंगा 59 to the power 32 into 59 to the power 32 into 59 to the power 32 हो गया 96 into 59 divided by 120. Now whenever 59 to the power 32 is divided by 120, remainder is 1. यहाँ पे भी remainder 1, यहाँ पे भी remainder 1. क्योंकि 32 जब आएगा यूजिंग यूलर्स थ्योरम द रिमाइंडर इज 1. तो 1 into 1 into 1 एंड यहाँ पे 59. तो एंड में 1 into 59. द फाइनल आंसर इज अगेन 59. ओके, तो फर्स्ट थ्योरम रिमाइंडर्स में. तो जैसे फैक्टर थ्योरी से रिमाइंडर थ्योरम कैसे लिंक किया?
यूलर्स नंबर यूज करके, क्योंकि वही सेम फॉर्मूला से यूलर्स नंबर आएगा तो यूलर्स थ्योरम हो गया। देन अनदर इंपॉर्टेंट थ्योरम जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसको विल्सन थ्योरम बोलते हैं। आई एम नॉट गेटिंग इनटू टू मच डिटेल्स ऑफ रिमाइंडर्स। Wilson's theorem says for any prime number p, remainder of p minus 1 factorial divided by p is p minus 1. Remainder of p minus 2 factorial divided by p is equal to 1. Remainder of p minus 3 factorial divided by p is p minus 1 by 2. And remainder of p minus 4 factorial divided by p, this is equal to 1 plus p by 6 and 1 minus p by 6. If this is p is 6k minus 1, and here if p is like 6k plus 1. सिंपल सा थ्योरम, बुक्स में यू विल फाइंड टिल दिस टू। मैं ये दोनों भी एक्स्ट्रा बोल दिया तो तुम्हारे लिए ये एकदम डायरेक्ट हो गया। एग्जाम में क्या होता है, ये दो पता रहता है, बाकी डिराइव करना पड़ता है। तो p माइनस 2 लेट से पता है, p माइनस 4 तक डिराइव करना पड़ता है। मैंने तुमको डायरेक्ट p माइनस 4 तक भी दे दिया फॉर्मूला, तो यू कैन जस्ट पुट द फॉर्मूला एंड फाइंड द आंसर इन द एक्चुअल एग्जाम। तो सपोज मैं p को ले रहा हूँ 17, तो रिमाइंडर ऑफ 16 फैक्टोरियल बाय 17 इज like 16 p minus 1. Remainder of 15 factorial by 17 is 1. Remainder of 14 factorial by 17 is 17 minus 1 by 2. 17 minus 1, 16 by 2, 8. And similarly remainder of 13 factorial divided by 17. Well, a prime number check kar lo. This is 6 into 3 minus 1. As the prime number is 6k minus 1, so the remainder is 1 plus p by 6. सर यहाँ पे क्या लिखना, ये तो हो गया इसका 13 factorial divided by 7, so 1 plus 17 divided by 6, so 18 by 6, the remainder is 6. Wilson's theorem, again simple rules. I am not saying like waste too much time in solving these kind of topics, but you can just simplify this and easily solve. अब अगर विल्सन से आ गया है तो यहाँ पे सम माइट आस्क कि व्हाट इज दिस फैक्टोरियल, तो वहां से फैक्टोरियल कॉन्सेप्ट लाइक रिलेट हो सकता है। नाउ दिस इज अनअकैडमी कैट एलीट, नवंबर 10 को ये बैच स्टार्ट हो रहा है। दीज आर द बैच फीचर्स, सो यू कैन एनरोल इन द बैच यूजिंग माय सब्सक्रिप्शन कोड दास लाइव and you can get a 10% discount. These are the batch highlights की बैच में क्या क्या होने जा रहा है। Okay. Now next thing is factorials. Whenever you write n factorial, it is a product of first 10 natural numbers. Product of first 10 natural numbers. So suppose I am writing 6 factorial, ठीक है, so it is like 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, 1 से लेके 6 मल्टीप्लाई होगा। इफ आई एम राइटिंग 5 फैक्टोरियल, तो 5 से लेके 1 तक मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। दिस इज द मीनिंग ऑफ फैक्टोरियल। नाउ इफ यू कंपेयर दीज टू, यहाँ से मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ दैट n फैक्टोरियल इज n into n minus 1 factorial. Can we conclude this? n factorial is n into n minus 1 factorial. This is 6 factorial.
is like 6 into 5 factorial. We can write it this way. एंड फॉर क्विकर कैलकुलेशन फैक्टोरियल के थोड़े बहुत वैल्यूज याद रखने चाहिए, जैसे 0 फैक्टोरियल हो गया 1, 1 फैक्टोरियल इज 1, 2 फैक्टोरियल इज 1 into 2 2, 3 फैक्टोरियल इज 1 into 2 into 3 6, 4 फैक्टोरियल इज 24, 5 फैक्टोरियल इज 120, 6 फैक्टोरियल इज 720 and 7 फैक्टोरियल इज 5040. 8 factorial is 40320. If you remember till 8 factorial, well and good. ऐसा कोई इसको याद रखना नहीं है. You can any day calculate. But if you are comfortable with till 8 factorial values, it is easier for you to think on the exam part. ठीक है. So to start with numbers, तुम ये बस ये तीनों छोटे छोटे टॉपिक्स कर सकते हो. मैंने रिमाइंडर्स का बहुत सारे रूल्स है. मैंने बस विल्सन्स एंड यूलर्स बताया. इसमें ही बहुत क्वेश्चंस तुम्हारा बन जाए. बहुत सारे क्वेश्चन बस यही दो में ही बन जाएंगे. एंड देन फैक्टर थ्योरी, यूलर्स फंक्शन, को प्राइम, तो इसको भी लेके क्वेश्चंस होते हैं. ठीक है. यू कैन पुट HCF, LCM, LCM मॉडल्स इनटू दिस आल्सो. बट तुम्हारा कॉन्सेप्ट अगर एक बार तुम इसी वे में इसको समझो, देन एग्जाम में एनी क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड, इट इज नॉट डिफिकल्ट फॉर यू. ठीक है. So try and solve some questions on these topics. Then जो रहा cyclicity of digits, and then the distribution theory. ठीक है. ये कमिंग सेशन में इसको करेंगे with some extra topics. So every area will try and see in this way. अब नंबर्स से मैं कुछ चैप्टर सिलेक्ट किया, बट अलजेब्रा जब आएंगे थोड़ा बड़ा होगा वो, एंड फिर ज्योमेट्री आएंगे और थोड़ा बड़ा होगा. अरिथमेटिक भी बड़ा सेशन रहेगा, बिकॉज वहाँ पे देयर आर ऑलमोस्ट ऑल टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट, स्पेशली अलजेब्रा अरिथमेटिक में. So that is why it is like very necessary on your part to like practice. ठीक है. Do not skip the chapter. अब ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स अगर हम स्किप करना स्टार्ट करेंगे, very problematic. Okay. So hope these like concepts help you and you are clear on this part. This is my Telegram group. You guys can join the Telegram group using this link, MBA Preparation Sarthak UN. So you can join my Telegram group over there. Now previous year questions ka practice. So do practice previous year questions. Available subject wise in mock test format in the Unacademy platform. Use my code and register. And also if you are struggling with the VRC part, last month है, थोड़ा देखो यहाँ पे. Very good content you will find on the Let's Crack Verbal channel. So do subscribe to that channel as well. If you are interested for a plus or an iconic subscription, you can use my code DASLive and avail a 10% discount. That was it from my end for the last mile revision part. Hope you guys understood these three concepts. I'm not overloading you with a lot of concepts. ज़्यादा लंबा सेशन नहीं कर रहा हूँ. I'll take up some important concepts like this from each area so that तुम्हें कोई पूरा चैप्टर स्किप करना ना पड़े. Okay. So thank you all once again. Do like and subscribe like the video and our channel, and share with your friends who are also preparing for CAT 2022. So we'll meet again in next session. Till then, have a nice day everyone. Thank you.